इश्क में लोग चांद तारे तोड़ लाते हैं, हम तो महबूब के लिए सीख कबाब ले आते हैं। वाह 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 वाह। Mostly, I have all different flavors. You can say about 10 to 15 varieties of assorted kebabs I have in my menu. I fell in love with kebabs. When I say I really like legs, this is what I mean. So this episode is about kebabs, kebabs, and more kebabs. I'm taking you to two fabulously new restaurants that have opened up in Bandra, which do kebabs, more kebabs. The joy of a kebab is in the cut of the meat, the piece of chicken that is used. So the way it's been marinated, it's the way it's been grilled and the fire within. तो चलिए वेंकीज प्रेजेंट खाना नंबर 1 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम खाने वाले हैं कबाब। तो इस रोमांस की शुरुआत करते हैं बांद्रा में, जहां है सलीम्स शाही सिगड़ी। चलो कबाब हो जाए। तो मेरे सामने है कबाब ही कबाब, और एक एक को मैं चुन चुन के खाने वाला हूं। पहले देखते हैं मेरे सामने क्या है। कश्मीरी चिकन टिक्का, मलाई सीख कबाब चिकन, दही लहसुनी कबाब, नॉर्मल मटन सीख कबाब, काकोरी कबाब, चिकन टिक्का क्रीम कबाब, और ये मेरा सबसे फेवरेट जो कबाब नहीं है एक्चुअली, लेकिन है भेजा मसाला। कश्मीरी टिक्का से स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस इज लुकिंग फैबुलस। देयर इज अ बिग कश्मीरी चिली इन इट। You know, the thing about a kebab is that it's got to be soft, tender. The choice of the pieces of meat need to be good and tender. Meets all those parameters. It's very unusual. It's beautiful. It's a chicken tikka, which has got this wonderful sort of sauce, thick gravy on top of it. It's made with Kashmiri chilies and coriander and spices and masalas. Damn nice. एक और खाएंगे आप. So if you like spicy kebabs, this is the one. Lovely. Soft, tender and spicy. We are more keen focused in serving a good quality food, good hygienic kitchen. People can see everything is in front of them. We don't cook it in before, and we don't use microwave and anything. And everything is fresh over here. And we have our own authentic hand grounded masalas, and all garam masalas and everything is prepared by us. Now let's try this chicken malai seekh kebab. वैसे तो seekh kebab is one of my favorite kebabs. But this one, let me drip it a little more. नॉर्मली मुझे सीख कबाब मटन का अच्छा लगता है, लेकिन ये चिकन का सीख कबाब बहुत ही अच्छा है, और ये ऊपर मलाई वलाई डाल के बहुत ही रिच और मुलायम और टेस्टी हो गया ये। ओह, वेरी नाइस। अगर आपको तीखा कबाब नहीं चाहिए, थोड़ा क्रीमी माइल्ड बच्चों के लिए, तो ये है चिकन टिक्का क्रीम कबाब। What I like about this kebab is that the outside is really nicely charred, which will give it a nice smoky flavor. Oh. In my mind, I have two views on whether we should have kebabs with cream or not. मेरा एक साइड कहता है कि क्रीम डालकर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है ये। एक साइड बोलता है कि मुझे थोड़ा चार्ड कबाब भी अच्छा लगता है। But this is nice. This is really nice. इसे ट्राई करें अभी। I'm keeping the normal seek and the kakori for the end, and then the bheja for the absolute end. बहुत chicken tikka done with dahi and lasan, dahi lasuni kebab, and full of butter, bro. Butter. Look at this.
everything goes better with butter. Yeah? Suddenly you're speaking like Salman Khan. Nice. Very good. Rich, delicious, smoky, creamy, buttery, and garlic which I love. अब सीख कबाब खाएगा? सीख कबाब खाते खाते एक शेर याद आया. अर्ज किया है कि इश्क में लोग चांद तारे तोड़ लाते हैं. इश्क में लोग चांद तारे तोड़ लाते हैं. हम तो महबूब के लिए सीख कबाब ले आते हैं. वाह 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 वाह. Seekh kebab is a bit of an art, okay? I think these are really good. It's a really soft paste of meat. It's melted in the mouth. Now, सीख कबाब हो गया. अब एक कबाब बाकी रह गया है. काकोरी है. काकोरी कबाब, the thinnest kebab in the world, the softest kebab in the world. And you can see, जैसे मैं उठा रहा हूँ, वैसे ये गल रहा है. Or rather, the way to test a good kakori kebab is how soft the inside is and the sheen and the slight film that comes outside the kebab. Oh, this is good. It's a soft, मुलायम, मुंह में पिघल जा रहा है कबाब ये, और उसमें थोड़ा सा एक परफ्यूम स्लाइटली. खाया गया. I think hardly people sell kakori or very well kakori in like around in Bombay. और एंड में दीवाने आम, दीवाने खास, मेरा खास भीजा मसाला. भीजा मसाला. Just full of fried onions and spices. This is one of the finest bheja masalas I've eaten. I have really spoiled myself over here. This was Salim's, the beginning of our little romance with kebabs. Let's see what we have in store after this. 1 minute, 2 minute, 3 minute chicken. Frankie's chicken in a minute. Come together with Venky's. कबाब का ये सिलसिला अभी तक जारी है, आगे बढ़ रहा है. पहुंचे हैं हम मियाँ कबाब बैंड्रा में. वहां जाकर और कबाब और रोमांस. चलिए. वो पूछते हैं कि इश्क की पहचान क्या है जनाब. वो पूछते हैं कि इश्क की पहचान क्या है जनाब. हमने कहा नरम नरम दिल और गरम गरम कबाब. वाह वाह. और मेरे सामने इतने सारे कबाब हैं. कहाँ से शुरुआत करूं मुझे पता नहीं है. मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बता देता हूं कि सामने क्या है मेरे. पहले तो ये है चिकन टिक्का कश्मीरी. ये है चंगेजी डायनामाइट, मतलब शायद तीखी होगी. ये सीख कबाब और अलग अलग रोटी नान अलग अलग कबाब के साथ देते हैं. ये जो है वो चंगेजी के साथ खाते हैं. ये रोटी जो है ये कश्मीरी के साथ खाते हैं. और ये मेरे सामने जो मेरी टीम मुझे कह रही है, जो बनाते हुए देखा उन्होंने, कि दिस ज़टार ब्रेड is stuffed with cheese with this hummus. Oof, it's hot. This is very nice. We're using a lot of za'atar in our sort of Mediterranean food nowadays. Here in India, a lot of food, people are getting used to this really nice spice that comes from the Middle East, and this naan with cheese inside and za'atar with this hummus is quite nice. But मैं यहाँ आया हूँ कबाब खाने.
तो कबाब खाए क्या? सीख, अरे वाह, ये हाथ लगाकर ही पता चलता है कि ये काफी मुलायम है. It's literally breaking up in my hand, which is good. It broke. Oh. You know, seekh kebabs are made in different ways in different restaurants. Some make them chunky with onion, raw onion inside. Some make it soft like this, which collapse, literally. Look at this. Just look at the meat. It's so tender. Oof. Okay, now Changezi try करते हैं. So this is a trend nowadays, making kebabs and then tossing them in butter and cream and spices and sauces to make it into a sort of gravy instead of eating them dry. Which is, I think, now very, very sort of Indian. It's such a familiar taste, this Changezi. This particular Changezi is a bit like a butter chicken. It is lovely pieces of tandoori chicken with a nice, slightly sour, slightly sweet sauce. Not full of cream and not very rich. There is butter, but not that much butter that it becomes overwhelming. Oh, this is good. The joy of a kebab is in the cut of the meat, the piece of chicken that is used. So the way it's been marinated, it's the way it's been grilled and the fire within. अब एक कश्मीरी ट्राई करते हैं. कबाब तो कबाब ऐसे ही खाते हैं. कबाब कबाब के साथ रोटी की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं. Excellent. Very nice. My mouth is filled with smoke, with the taste of charred meat, with the taste of spices, and in this case, the red Kashmiri chilies. अभी ये जो मुझे नाम से ही डर लग रहा है, डायनामाइट. When I say I really like legs, this is what I mean. Okay, it's not as dynamite as I thought. It's quite nice. It's actually got a little sweetness in the spice. Oh my God, it is dynamite. It hits you a little later on. There's chili in it. It's very deceptive. It starts off being creamy and nice, and then the chili hits you a little bit. So it's been an evening of romance. I have romance with something that is really close to my heart, kebabs. We've gone to two places, both really, really wonderful places, both new. We've taken the kebab to another level while still retaining some of the old sort of flavors and the tradition of the kebab. If you like this episode, please write to us, share कीजिएगा, subscribe कीजिएगा, and see you next time on Venky's Presents Khana number 1.